where you're watching DHA Lahore's 38th Men's and 2nd Women's National Boxing Championship. I'm your host and commentator, Mohammad Moinuddin, and with me is commentator Raja Asad Ali Khan. Round one. Round one begins here. The men's cruiserweight fight at the 86 kg bout. In red, we have Nazirullah representing Team Army, and in blue, we have Mirza Azam representing Team Pakistan Air Force. The stature of both of these boxers suggests that they are very powerful, and also the way they're beginning this fight shows that they're very experienced. I'm your host and commentator, Mohammad Moinuddin, and with me is co-commentator Raja Asad Ali Khan. बिल्कुल नज़ीरुल्लाह और मिर्ज़ा आज़म बिलतरतीब आर्मी और पीएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जो मुकाबले की सतह है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो ऊंचे मयार का होगा, क्योंकि दोनों बड़े इदारे हैं और इनके खिलाड़ी ज़ाहिर इन पर ख़ास तवज्जो दी जाती है. और ये बारहा मुख्तलिफ मुकाबलों में मुल्क की सतह पर अपनी टीमों की नुमाइंदगी कर चुके हैं. तो ये 86 kg का स्टेचर का ये मुकाबला है. Mirza Azam already bleeding from the hard and heavy shots that Nazirullah has just landed. Nazirullah, once again I say, is in blue, and he has knocked down Mirza Azam for the first time. Mirza Azam gets back up. This could lead to a knockout very early. Mirza Azam is bleeding heavily. Nazirullah seems confident of the performance he has shown here. Nazirullah in red representing Army, whereas Mirza Azam representing PAF, who has gone off to a very shaky start. You can see the blood dripping down from his nose. Even now, I don't know for how long he'll be able to continue as Nazirullah continues this brilliant attack, and now the Mirza Azam has held on to Nazirullah in order to break. With me is Raja Asad Ali Khan. बिल्कुल नज़ीरुल्लाह ने अब जो इब्तिदा की है, इसमें ज़ाहिर है कि वो सबकत ले जा रहे हैं. और मिर्ज़ा आज़म पहले ही राउंड में ज़ाहिर है कि अनस्टेबल हो गए हैं, कुछ ब्लीडिंग भी हो रही है. इतनी जल्दी इतना कुछ होना नहीं चाहिए था. बोथ आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग. मिर्ज़ा आज़म ज़ाहिर है कि पीएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बिसाइड द पॉइंट नज़ीरुल्लाह जो हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मुकाबला मुझे लगता है आगे बढ़ेगा और कम बैक करेंगे बड़े अच्छे तरीके से मिर्ज़ा आज़म. I would love to watch nothing more than for Mirza Azam to make a comeback here. Raja Asad Ali Khan, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मिर्ज़ा आज़म के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कम बैक करें, लेकिन right now he's against the ropes और referee had to break them. और इसी तरह नज़ीरुल्लाह अब दोबारा से अटैक शुरू करेंगे. From the bottom he starts. Good left uppercut. Good shots to the midsection from the right. Repeated strikes from the right. And again once, Mirza Azam has no response to this. It seems Nazirullah has a very strong strategy against this opponent or any other. He seems to be ready for this fight. And that is the end of the first round. Both fighters knock gloves and return to their corners, where finally Mirza Azam can receive some proper treatment for this nosebleed that he has encountered right here in the beginning minutes of the first round. तो ये ब्लू कॉर्नर है जहाँ पे मिर्ज़ा आज़म को ज़ाहिर है कि वाटर किया जा रहा है, और आप देख लें कि प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग हो रही है उनके नोज़ से. यंग मैन है, ये कोई इतना बड़ा ज़ख्म नहीं होता. ये नोज़ बड़ा सेंसिटिव होता है बॉक्सिंग में, और सून ही विल बी कम बैक. अदर वे अराउंड वो बिल्कुल ठीक और स्टेबल दिखाई दे रहे हैं. और ये हैं पाक आर्मी के नज़ीरुल्लाह, जो एक बेहतर पोजीशन में है. इन्होंने काफ़ी ज़ोरदार पंचेस लगाए मिर्ज़ा आज़म को, जिनका ताल्लुक पीएफ से है. और फिजिकली ही इज़ लुकिंग मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल एंड इज़ लुकिंग एम्बिशियस, आई वुड से. तो अब सेकेंड राउंड जो है, I agree with you here. At the start of round 2, we see Nazirullah representing Team Army in red holds the upper ground against Mirza Azam representing Team Pakistan Air Force in blue, and you can tell that by the confidence and the commitment in his eyes. He was pressed against the ropes, but he literally pushes Mirza Azam back because Mirza Azam was not giving him the space that he deserved, and the referee had to break them up, pitches them back.
both against each other, and now they're back in the action. There's a degree of comeback as far as Mirza Azam is concerned. He's looking more, aggressive and to an extent more vigilant against Nazirullah. Mirza Azam is determined to make a comeback and to fight until his last breath, because he will not go down easy. That is the statement we have seen at the beginning of the second round here at the DHA Lahore 38 men's and second women national boxing championship, brought to you by Jio Super. तो इस तरह अब दोनों नज़ीरुल्लाह और मिर्ज़ा आज़म नबद आज़मा हैं. मिर्ज़ा आज़म पीएफ और नज़ीरुल्लाह आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं. नज़ीरुल्लाह का रेड कॉर्नर है, रेड लिबास पहने हुए हैं, और इनका ताल्लुक़, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तान आर्मी से इनका फिल वक्त क्या ना होगा अपर हैंड है. मिर्ज़ा आज़म पर जिनका ताल्लुक़ पीएफ से है, तो एक बिलो द बेल्ट हिट किया था नज़ीरुल्लाह को मिर्ज़ा आज़म ने, लेकिन बहरहाल वो कोई इतना नतीजा खेज या कोई इतनी हिला देने वाली पंचिंग नहीं थी. Mirza Azam trying some uppercuts, but he was far away from Nazirullah when he attempted those. But his camp here, PF camp, trying to cheer him on, trying to give him the courage that he needs at this moment in the second round. He gets a very hard shot to the face, but Nazirullah had trapped him there with his other arm, and he gets some relief thanks to the referee. Nazirullah once again goes for the punch but slips down. This time he is composed, but unfortunately he couldn't keep his balance against Nazirullah while going for the attack. नज़ीरुल्लाह की डोमिनेंस बरकरार है और वो अच्छे पंचेस लगाने में कामयाब भी हुए हैं. नज़ीरुल्लाह ज़ाहिर है कि एक और अब देख सकते हैं कि मिर्ज़ा आज़म का जो कवर है, जो फेशियल गार्ड है, वो भी अपनी जगह से हिल गया है. तो ज़ाहिर है कि अब वो जो एक अनस्टेबल सिचुएशन है वो मिर्ज़ा आज़म के लिए है. इनको ब्लीडिंग भी हुई थी, लेकिन ही लुक अ टफ गाय मेरे ख्याल में, और बावजूद इसके कि नज़ीरुल्लाह ने काफ़ी डोमिनेंस दिखाई है, हमने मिर्ज़ा आज़म को देखा है कि ये स्टेबल रहे हैं. तो अब दोबारा खेल शुरू होगा. Absolutely, a shot to the midsection by Mirza Azam against Nazirullah. Nazirullah holds on to the second punch. He's not allowed to do that. I think he's been giving a second warning by the referee, and Nazirullah continues his successful campaign against Mirza Azam. Mirza Azam, meanwhile, the underdog, trying for a comeback. Whoa! Both fighters here trying to land attacks at the end of the second round. That was desperation from both fighters, and we like to see a bit of competition, but only while it's within the rules. बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा. ये मिर्ज़ा आज़म हैं PAF के, अंडर प्रेशर भी हैं, कुछ ब्लीडिंग भी हो रही है, और दूसरी तरफ ये पाक आर्मी के नज़ीरुल्लाह हैं. मिर्ज़ा आज़म दूसरे एंड पे हैं, और इनको हम देख रहे हैं कि इनका जो मोरल है, एनर्जी लेवल है, और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो फेस से आया है. जबकि किसी हद तक कहना होगा मिर्ज़ा आज़म जो हैं वो थोड़े अनस्टेबल हैं, लेकिन लगता है कि वो मुकाबला करने की बिल्कुल पोजीशन में हैं. उनका मोरल बिल्कुल ठीक है. And round 3 begins. Mirza Azam, nobody, especially me, thought that he would make it to round 3 after that profuse nosebleed that he suffered in the first round. But here we are, Mirza Azam in blue, representing Team PF, fighting hard against Nazirullah in red, representing Team Army. And now Mirza Azam has got Nazirullah. They go fighting again, throwing punches. Nazirullah once again successful and knocks Mirza Azam down to the ground. The second time this has happened in this fight. Nazirullah with clear dominance in towards the third round as well. बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अगरचे हम इसको कांटेदार मुकाबला नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मिर्ज़ा आज़म ने अभी तक अच्छी मुज़ामत की है. नज़ीरुल्लाह ज़ाहिर डोमिनेट कर रहे हैं. कुछ
फिटनेस के मसाइल भी फिर वक्त मिर्ज़ा आज़म के लिए हैं और अब दोबारा खेल शुरू हुआ और भरपूर क़ुव्वत से अपने ज़रबे लगाते हुए नज़ीरुल्लाह मिर्ज़ा आज़म को, और जो मिर्ज़ा आज़म के सपोर्टर्स हैं थोड़े मायूस शुरू हुए होंगे जो इब्तदाई हुआ था। अब देख लीजिए एक और जगह से भी अपने रुखसार के नीचे से भी, आंखों के नीचे से भी उनको ब्लीडिंग हो रही है। Finally, a turnaround we see here. Mirza Azam, despite receiving heavy blows, has knocked down Nazirullah for the first time in the third round. And now he holds on to Nazirullah as he tries to attack. There is a lot of blood coming off of Mirza Azam's face and nose. This doesn't look good for Mirza Azam. बिल्कुल इससे एक तासुर ऐसा मिलता है कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। अब फिजियो एक्शन में आएंगे और ऐसी सूरत हाल में आपका तजर्बा कराना मुशाहिदा क्या है कि खेल जारी रहेगा, ज़ाहिर है कि अपनी अवेलेबिलिटी शो करेंगे मिर्ज़ा आज़म, और दूसरी तरफ कहना होगा कि नज़ीरुल्लाह की जो डोमिनेंस है, उनकी जो बर्तरी है, उनकी जो सबकत है, वो कायम और दायम है। बिल्कुल राजा असद अली खान साहब, आपने एक बेहतरीन सवाल पूछा एक बार फिर से। ये जो कट्स होते हैं और ये जो ब्लीड्स होते हैं फेस के ऊपर, ये बड़े कॉमन है बॉक्सिंग में, एमएमए स्पोर्ट्स में और रेसलिंग में। इसकी वजह ये है कि आपके चेहरे के अंदर छोटी छोटी नसें चल रही होती हैं जिनसे ब्लीडिंग आराम से हो जाती है, लेकिन इनकी वजह से ख़ास पेन नहीं होता। इसमें सिर्फ ये मसला होता है कि आपकी विजन को, आपकी नज़र को या आपकी ब्रीदिंग को किसी तरह से इफेक्ट ना करें। तो घमसान की इस वक्त मुक्केबाजी हो रही है, बॉक्सिंग हो रही है बिटवीन नज़ीरुल्लाह एंड मिर्ज़ा आज़म, जिसमें नज़ीरुल्लाह की डोमिनेंस जो है अभी तक बरकरार है, लेकिन एक ज़बरदस्त घूसा लगाने की कोशिश की, एक पंच लगाने की कोशिश की मिर्ज़ा आज़म ने, वो किसी हद तक इसमें कामयाब हुए। थोड़े बरंगेख्ता हैं, परेशान हैं मिर्ज़ा आज़म, एक शॉकिंग सिचुएशन है उनके लिए। I couldn't agree more. Mirza Azam trying desperately to hold on to the match, लेकिन उनको नजर आ रहा है कि नज़ीरुल्लाह उनसे यह छीन चुके हैं due to his very powerful and very accurate blows. मिर्ज़ा आज़म ने बहुत कोशिश की और बहुत चैंपियन की तरह लड़े और उन्होंने अपना ग्राउंड होल्ड करने की कोशिश की। इसके बावजूद नज़ीरुल्लाह seems to be very dominant. लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये क्वालिटी बाउट है और लग रहा है कि दो बड़े बॉक्सर नबत आज़मा हैं एक दूसरे के खिलाफ। ख़ास तौर पे हम नज़ीरुल्लाह की तारीफ़ करेंगे जिनका ताल्लुक आर्मी से है। मिर्ज़ा आज़म भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं, गो कि वो बैकफुट पर हैं, लेकिन घूसे लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। A lot of quick hits to the midsection from Nazirullah. That was beautiful to watch, and the third round ends here, and Nazirullah is happy to raise his hand towards his fans because he thinks that he's won this match. बिल्कुल, और जो लगता है इनके सपोर्टर्स हैं, इनके अजीज़ हैं, वो भी बैठे हुए हैं, और जो एक मतवक्को तौर पे अच्छी परफॉर्मेंस है नज़ीरुल्लाह की, वो इन्हें इस मैच का फातेह करार दे सकती है। लेकिन अभी हतमी फ़ैसला आएगा और रिज़ल्ट जो है आप देख रहे हैं कंपाइल किया जा रहा है। पाँच जजेस होंगे और अभी से नज़ीरुल्लाह महसूस कर रहे हैं कि राइटिंग ऑन द वॉल वो सेंस कर सकते हैं एक पॉसिबल विक्ट्री, लेकिन अभी ऑफिशियल रिज़ल्ट आएगा। बिल्कुल ताज़ा दम है, फ्रेश हैं, एनर्जेटिक हैं, हाई मोरल है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि मिर्ज़ा आज़म काफ़ी हद तक लो मोरल पे हैं और परेशान भी होंगे उनके कोच भी, उनके सपोर्टर्स भी, लेकिन एक बड़ा जानदार ये बाउट हुआ। Beautifully expressed. Raja Asad Ali Khan here with me on commentary. This is Muhammad Moinuddin, your host and commentator, and the writing is on the wall. And here is your winner by technical decision, Nazirullah, representing Team Army. बड़ा आज शानदार खेल पेश किया नज़ीरुल्लाह ने। उनकी फोर्सफुल पंचिंग, उनका फुटवर्क और उनकी जो तेज़ मूवमेंट थी, उसने इस बाउट में उनको मुकम्मल कामयाबी दिलवाई मिर्ज़ा आज़म के ऊपर, जो बड़े डेडिकेटेड नज़र आए। और उनका जो अंदाज़ था वो गो के जारहाना था, लेकिन उसमें उन्होंने किसी भी मौके पर हिम्मत नहीं आ रही, उनको ब्लीडिंग भी हुई
और उनके जो खून चका चेहरे को हम देख सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कंटिन्यू रखा अपना खेल कंटिन्यू रखा और स्टंप नहीं किया। ये बड़ी खुशाइंद बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। You are watching DHA Lahore's 38th Men and 2nd Women National Boxing Championship right here on Geo Super, the exclusive media partners for this event. And now we have 5 very exciting fights left for you. These are the men's heavyweight and the men's super heavyweight fights coming up on your screen. Don't go anywhere. Round 1. Ladies and gentlemen, round 1 here for the men's heavyweight fights in the 92 kg bout between red corners Wasim Rahman representing Team Punjab and blue corners Gul Daraz Khan representing Team Railway. We are underway with the first fight and both fighters look energized. Both fighters look very confident in their stances. They are fast and they are cocky. They're mocking each other right now. This is a fun sight to behold. In red we have Wasim Rahman, who is representing Team Punjab, who lands a very good punch just now. And in blue we have Gul Daraz Khan, who is also landing excellent punches. One to the midsection from the right and now one to the top. Quickly evades the attack by Wasim Rahman and is able to keep standing in the first round here. A quick flurry of punches, and these punches are not easy, ladies and gentlemen, to take. These punches are very hard to take. This was very difficult. This was gruesome rather. And with me I have on commentary Raja Asad Ali Khan. बिल्कुल आपने कहा कि ये हम गुल दराज को देख रहे हैं जिनका ताल्लुक रेलवे से है। बड़े पावरफुल बॉडी स्ट्रक्चर के मालिक हैं ये। और आप देखिए जिस तरीके से हमलावर हो रहे हैं वसीम रहमान, वो एक तासुर दे रहा है कि ही इज़ अटैकिंग बॉक्सर और उनके जो पंचेज है उसमें काफ़ी फोर्स दिखाई दे रही है। Each of these punches here are devastating to receive, and these fighters are shockingly accurate with those punches. We haven't seen this sort of accuracy in a lot of matches here, but in the heavyweight division, the 92 kg rather, bout that we're seeing here between Wasim Rahman in red and Gul Daraz Khan in blue, this is amazing to watch because the power and the accuracy is truly a sight to behold. इस फाइट में ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र आ रही है और गो के जो फुटवर्क है उसमें वो तेज़ी या वो रेगुलरिटी नहीं है जो कि इस खेल का खासा है, लेकिन फिर भी जो पावर हिटिंग है और जो पावर पंचिंग है लगता है कि वो इन दोनों का यानी वसीम रहमान और गुल दराज खान का तुल्य इम्तियाज़ होगी। Gul Daraz Khan trying to advance onto his opponent. Both of them land a punch at the same time. Wasim Rahman successful in landing another punch with his left jab on to Gul Daraz Khan. And Gul Daraz Khan now taking the brunt of the attacks. What we are seeing here is 2 attacks to the back, which is an illegal shot by Gul Daraz Khan. And Wasim Rahman is being asked if he can continue this way. That concludes the first round. Wasim Rahman heading to his corner. He was very close to Gul Daraz Khan's corner at the end of the first round, and we'll see what happens. Mainuddin, can you tell me why Wasim Rahman and Gul Daraz both are looking tiresome to start with? Temperatures okay और ऐसा टाइम ड्यूरेशन भी ऐसी नहीं है। परहैप्स दोनों की जो अप्रोच है वो थोड़ी डिफेंसिव दिखाई दे रही है। स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि गुल दराज खान इज़ नॉट कमिंग अप, जो कि पहले राउंड का एक खासा होता है कि आप अटैक करें, जो कि एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है। ऐसा हुआ नहीं है। लेट्स होप कि दूसरा राउंड जो है उसमें कुछ तेज़ी हमें नज़र आएगी। बिल्कुल जैसे कि आप कह रहे हैं राजा असद अली खान साहब, देयर इज़ a significant factor of stamina and fatigue
that is at play here. Round और ये फटीक two. पहले राउंड से ही शुरू हो चुकी है और सेकंड राउंड अब स्टार्ट हो रहा है थोड़े से ब्रेक के बाद. शायद ये दोनों फाइटर्स जो है वो रिकवर कर चुके होंगे. शायद ये फटीक इसी तरह चलती रहेगी. और हम देख रहे हैं जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, गुलदराज खान जो हैं उनकी फिटनेस भी थोड़ी सी इन क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू हिज अपोनेंट वसीम रहमान इन रेड टुडे, बिकॉज वसीम रहमान लुक्स फिट, he looks agile, he looks ready to attack, but Guldaraz Khan here has the power and he nearly knocks out, but he catches Wasim Rahman due to the punches that he threw there. I don't know what happened to Wasim Rahman. I think there was few punches. He lost his balance or he lost his confidence as well. Let's see what happened and how he come back with more zeal and with more dedication and enthusiasm. Very hard punches, and we're seeing a close to this event. Maybe, if I'm not wrong, the referee is asking both fighters to report to the middle. Yes, the gloves are off, ladies and gentlemen. This is the end of the fight between Wasim Rahman and Guldaraz Khan. We're waiting on the message from the judges to see what the official announcement is. What really happened? आप अब क्या समझ रहे हैं कि क्या ये फोरफीट कर दिया है गुलदराज खान ने और अदर वे अराउंड वसीम रहमान, कुछ ऐसी आपको ऐसे सिग्नल्स मिले हैं? I think it was Guldaraz's power जो कि तरजीह ले गई इस मुकाबले में, और मुझे लग रहा है कि Guldaraz Khan might have done a number on his opponent. Let's see. It was more of a friendly match rather than to be a competitive. But both the seasoned, boxer, they are standing now right and to the left of the match referee, or rather referee, I would say. और बहुत जल्द जो है वो नतीजा जो है वो बाउट रेफरी हम कहना चाहिए. और ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक जोशो खरोश है और एक फेस्टिव लुक है. And the winner is Guldaraz Khan by a knockout. तो इस तरह गुलदराज खान इस बाउट में कामयाब हुए और उन्होंने वसीम रहमान को शिकस्त दी जिनका ताल्लुक पंजाब से था. तो बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का ये बाउट रहा. Right, and we can see here now the next fighters entering into the ring. This is the second men's heavyweight competition in the 92 kg bout, and we're waiting for the official announcements. Here we have in the blue corner Usman Khan representing Pakistan Police, and in the red corner we have Sanaullah representing Team Wabda. Round one. Ladies and gentlemen, round one is underway here at the 38th Men's and 2nd Women National Boxing Championship, brought to you by Geo Super, exclusive media partner, organized splendidly by DHA Lahore. And here we have in red Sanaullah representing Team Pakistan Wabda versus in blue Usman Khan, who is representing Team Pakistan Police. तो दोनों डिपार्टमेंटल खिलाड़ी हैं. उस्मान खान पुलिस और सनाउल्लाह वैबडा बिलतरतीब ब्लू और रेड कॉर्नर्स पर खड़े हैं. और मुझे लग रहा है कि ये दोनों क्योंकि इदारा जाती खिलाड़ी हैं, बॉक्सर्स हैं, अच्छा मुकाबला मुतवक्को है. Right at the beginning here, we saw Sanaullah knock out Usman Khan's mouthpiece, and that is the explanation for the little break that there was in the first round here. I am your commentator and host Muhammad Moinuddin, and with me is co-commentator Raja Asad Ali Khan. उस्मान बज़ाहिर लीड करते हुए वक्ती तौर पर और सनाउल्लाह ज़रा बैकफुट पर हैं. इनका ताल्लुक वैबडा से है. दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो बैलेंस लूज करने की एक प्रोपेंसिटी है, जो एक सलाहियत है, वो हमें बार बार नज़र आ रही है.
हम देख रहे हैं सनाउल्लाह को, और सामने हमारे हैं उस्मान खान जिनका ताल्लुक पुलिस से है। काफ़ी शोर शराबा है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। द क्राउड इज रियली एंजॉयिंग इट। सनाउल्लाह एडवांस करते हुए और डॉज करते हुए फ्रॉम टीम बाप्टा बेहतरीन शो दे रहे हैं इस वक्त। ही इज शोइंग द प्रोएस ऑफ अ वेरी गुड एंड टेक्निकली साउंड बॉक्सर, सम वेरी गुड ब्लॉक्स, एंड नाउ सनाउल्लाह इज रेडी टू अटैक against Usman Khan again. Sanaullah in red here versus Usman Khan in blue. And here Usman Khan has been knocked down and the count is continuing. Sanaullah seeming very confident. Wow, what have we seen here? This is a knockout of epic proportions by Sanaullah from Team Babda. Sanaullah has put on an absolute show here. He should be proud of the power that he has displayed. Raja Asad Ali Khan with me. Raja Saab, what are your thoughts on this amazing, amazing knockout that we've just seen here? It's a good, not a good, picture to see. उस्मान खान जिस तरीके से collapse कर गए हैं, और लगता है कि वो दोबारा आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ज़रा कि फिजियो कोच मुआयना करेंगे, रेफरी भी इनको देख रहे हैं, और खेल थोड़ी देर के लिए मुअत्तल है। जहाँ तक उस्मान खान का ताल्लुक है, जब वो उठे तो उनमें वो पावर नहीं थी और लग रहा था कि वो कुछ वक्त लेंगे तो अपनी वो जो कुव्वत है उसको रिकलेक्ट करने के हवाले से। और दूसरी तरफ सनाउल्लाह के जो पावरफुल पंच थे, मुझे लगता है वो सही टाइम कर गए, सही जगह पर हिट कर गए, जो ठीक निशाना होता है, जिसने काफ़ी हद तक एब्सोल्युटली सनाउल्लाह बहुत एक्यूरेट थे अपने पंचेस के साथ। और ये हैवी वेट बाउट्स के अंदर जैसे हमने देखा पहले भी और अब दोबारा, नॉकआउट्स आर वेरी कॉमन, क्योंकि जो स्ट्रेंथ होती है, यू कैन नॉट टेक मोर देन अ फ्यू ऑफ दीज पंचेस। आप 1, 2, 3, 4 खा लेंगे, लेकिन 5वें पंच जो कि एक्यूरेट और पावरफुल होगा उसको आप नहीं सह सकेंगे। एंड हियर वी हैव both the fighters in the center of the ring with the referee. उस्मान बिल्कुल ताकतवर नौजवान दिखाई देते हैं, लेकिन आज वो एक ज़ोरदार पंच की ताप डाल सके जो कि सनाउल्लाह ने उनको हिट की थी। Here is your winner, Sanaullah from Team Babda by knockout. इस तरह ये मुकाबला भी यकतरफा साबित हुआ है और सनाउल्लाह ने एक शानदार जीत हासिल की है। A beautiful display of sportsmanship displayed by the winner Sanaullah. He held the ropes open for his opponent Usman Khan to exit the ring. Sanaullah really making Team Babda proud here, and this was the final heavyweight match in the 92 kg bout. We're about to move to the very exciting super heavyweight events right here, ladies and gentlemen, on Geo Super, where you're watching DHA Lahore's 38th Men's and 2nd Women's National Boxing Championship. I'm your host and commentator, Mohammad Moinuddin, and with me is commentator Raja Asad Ali Khan. माइन जो नेक्स्ट बाउट शेड्यूल है वो हमारे मुताबिक नवीद खालिद जिनका ताल्लुक रेलवे से है और अजहर अली जिनका ताल्लुक आर्मी से है, इनके माबैन होगा। और ये भी बिलतरतीब रेड और ब्लू कॉर्नर्स पर खड़े होंगे और इनकी जर्सियां भी इसी कलर की होंगी। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि तैयारी हो रही है अगले बाउट की, और पहला जो बाउट था उसमें किसी हद तक डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी उस्मान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनकी, जबकि दूसरी तरफ सनाउल्लाह ने चारों शाने चित किया उस्मान खान को। तो ये इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में बॉक्सिंग खेल ही ऐसा है। अजहर अली इज स्माइलिंग, दैट मीन ही हैज नो प्रेशर, तो ये बड़ी पॉजिटिव अप्रोच होती है। अब लग रहा है कि हम देख नहीं रहे कि नवीद खालिद उनको कॉल किया जा रहा है, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि अजहर अली मुस्कुरा रहे थे। तो इसकी ज़ाहिर है कि इसका पस मंज़र ये था, कभी ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड होता है कि आप बॉक्सिंग के इस तरह के मुकाबले के बारे में इतने क्रेव फ्री हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप असद साहब
क्योंकि इस वक्त जो कॉन्फिडेंस और जो हंसी अज़हर अली के चेहरे पर हम देख रहे थे, उसकी वजह एक ही हो सकती है कि उनको लग रहा है कि उनके अपोनेंट आज उनको फेस नहीं कर पाएंगे, which is both lucky and also I would say fortunate for अज़हर अली कि ये सुपर हैवीवेट बाउट जो कि बहुत धुआंधार होता है, इसमें बहुत जान लगती है। अब सेकंड कॉल हुई। अच्छा, इसमें ये बताएं कि ऐसा होता क्यों है? ये एक नेशनल इवेंट है और नवीद आलम ने अपनी दस्तयाबी के हवाले से या पाकिस्तान रेलवे ने उनकी दस्तयाबी के हवाले से पहले इंटीमेट क्यों नहीं किया? बाज़ औक़ात वो एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड होता है कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जो कि तवक्को नहीं होती, मतवक्को नहीं होती। तो मेरे ख्याल में नवीद खालिद के साथ कुछ ऐसे ही हुआ होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक आ गई होगी, कुछ ऐसा इवेंट हो गया होगा कि नवीद खालिद वाज अनएबल टू शो अप। और ये जिस तरह से आपने जिक्र किया कॉल्स का, ये बहुत ज़रूरी होती हैं कि अपोनेंट को पूरा टाइम दिया जाए आने के लिए, कि अगर सिर्फ डिले है और इनफैक्ट वो एब्सेंट नहीं है या वो बाउट नहीं मिस कर रहे, तो उनको एक फेयर डील ऑफ टाइम दी जाए ताकि वो शो अप कर सकें। लेकिन जैसे कि नज़र आ रहा है, वी आर अबाउट टू मूव ऑन टू द 37th एंड सेकेंड लास्ट बाउट for today in super heavyweight category, and it seems that the winner is about to be announced by walkover. तो बॉक्सिंग में जो वॉकओवर है वो तो वाकई एक बड़ा, बगैर लड़े आप आगे चले गए हैं, तो लड़ना भी एक मुशक्कत है, लेकिन इसमें एक जज्बा भी होता है, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है। लेकिन अज़हर अली जिस तरीके से खुश हैं, मुतमईन है, वो ज़ाहिर है कि तो इस तरह जो अब अगला बाउट है वो जो हमारे पास शेड्यूल है वो असद अली और तारिक महमूद के माबैन होगा, जिनका ताल्लुक AJK और पुलिस से है। बिल्कुल, we're patiently awaiting the super heavyweight bout that we're about to see here, because super heavyweight means super hard punching and plus 92 kg bout होगा ये। The power that we'll see behind those punches, we already saw कि heavyweights में किस तरह दोनों opponents knockout हो गए, the first one in the second round and the second one in the first round. That was impressive for me. It was very exciting. I wonder what we will see in the super heavyweight rounds. रेड कॉर्नर सुपर हैवी वेट कैटेगरी में असद अली आज़ाद जम्मू कश्मीर रेड कॉर्नर, तारिक महमूद पुलिस ब्लू कॉर्नर। दो मुकाबले पहले वार्म अप में रखे। Once again, we're in a situation where blue corner is waiting for their opponent in the red corner. This time, Asad Ali, the opponent, is the person we are waiting for, who belongs to फेडरेशन के तमाम टेक्निकल ऑफिशियल Azad Jammu and Kashmir. And Tariq Mahmood from Team Police is standing in the blue corner, ready to face his और opponent. तमाम टीम बिल्कुल वो जो आप प्रोटोकॉल्स बता रहे थे, जो ज़ाब्ता है, मेरे ख्याल में असद अली को जल्द तक पहुंचना होगा और उम्मीद यही है कि वो बहुत जल्द रिंग के पास ले यहाँ आएंगे। पहुंच जाएंगे। ठीक इंशाल्लाह 12 बजे देख सकते हैं कि ब्लू कॉर्नर में मौजूद हैं तारिक महमूद, जिनका ताल्लुक पुलिस से है। मुकाबले हैं उनके वजन आपको वार्म अप कर रहे हैं हो जाएंगे। और दूसरी तरफ कुछ ताख़ीर हो रही है, लेकिन जल्द पहुंचना होगा असद अली को, जिनका ताल्लुक AJK से है। ये रेड कॉर्नर पर जाएंगे, जो कि मुंतज़र है अभी उनका। और ये फर्स्ट कॉल दी जा रही है असद अली को। गालिबन इसके बाद सेकंड कॉल होगी और फिर शायद वॉकओवर अनाउंस कर दिया जाएगा तारिक महमूद के फेवर में, क्योंकि असद अली इस वक्त रिंग में नहीं आ चुके। ये बहुत बड़ा मुकाबला है, बड़े ऊंचे मयार का है। वॉकओवर का बता दें, वॉकओवर हो गया बता दें। वो उसने अनाउंस कर दिया सदीकुल्लाह को प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, अभी सेकंड कॉल होगी, सेकंड कॉल देनी है ये अभी। हाँ, ये बिल्कुल, ये अभी जजेस की डिसीजन भी आ गई है, उन्होंने डिसीजन कर लिया कि अभी
अब जो एक्टिविटी हो रही है आप देख रहे हैं कि जजेस अपनी नोटिंग दे रहे हैं। ये किस हवाले से है कि क्या असद अली अभी तक नहीं पहुंच पाए? बिल्कुल ऐसा ही है असद साहब के लग रहा है कि हमारा सेकंड सुपर हेवीवेट भी, जिसके लिए मैं सुपर एक्साइटेड था, शायद ये भी देखने को नहीं मिलेगा। एक थर्ड और फाइनल सुपर हेवीवेट मैच रहता है और फिलहाल ऐसा लग रहा है, यस बिल्कुल ऐसा ही है। तो AJK के अब ये ऐलान कर दिया गया है कि तारिक महमूद जो पुलिस के हैं इनको वॉक ओवर दे दिया गया है और वो विनर करार पाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तारिक महमूद ऑल्सो एडवांसेस टू द क्वार्टर फाइनल्स, जो कि इसके बाद देखे जाएंगे। सुपर हैवी वेट में 2 वॉक ओवर्स फिलहाल हमने देखे हैं। पहला वॉक ओवर मिला गालिबन अजहर अली को, जो कि टीम आर्मी के थे, और दूसरा वॉक ओवर मिला टीम पुलिस के तारिक महमूद को, both coincidentally in the blue corner. और now we move to the third super heavyweight match and the final match for session 4. The super heavyweight in the preliminaries. This is the plus 92 kg bout between Sadiqullah from Team Balochistan, who will be shown in red, versus Mahmood Al Hassan from Team Pakistan Air Force, who will be shown in blue. तो ब्लू कॉर्नर पर महमूद उल हसन आ गए हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है, और वो मुंतज़र हैं सदीकुल्लाह के, जो कि बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है। वो रेड कॉर्नर पर आ गए हैं। तो अब ये मुकाबला जो है वक्त पर शुरू होगा। बहुत लुकिंग सुपर फिट, बड़ा जज्बा है इनमें, और दे आर लुकिंग फॉर अ विक्ट्री। ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के जो मरदम खेज़ इलाका है, वहाँ पर बड़े सख्त जान खिलाड़ी होते हैं, और जो बॉक्सिंग है, ज़ाहिर है कि इसमें जो पावर है, जो सख्त मिजाजी है, उसका बड़ा अमल दखल है। And here we are, underway of the first round for the super heavyweight bout between these two giants, I should say. In the red corner we have Sadiqullah representing Team Balochistan, whereas in the blue corner we have Mahmood Al Hassan representing Team Pakistan Air Force. Both are looking super fit. Sadiqullah ज़ाहिर है कि वो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिसाइड महमूद हसन जिनका ताल्लुक PF से है। तो बोथ आर लुकिंग इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये तासुर दे रही है कि दे आर बॉर्न फॉर दिस गेम। एब्सोल्युटली, ये प्रॉपर प्रोफेशनल बॉक्सर्स लग रहे हैं, और ये इसी तरह की फाइट एक्सपेक्टेडली हमें देंगे। हार्ड शॉट टू द बॉडी by Sadiqullah to Mahmood Al Hassan. He lowered his stance and he took 2 shots, right then left, and a hard punch from the right. Mahmood Al Hassan to Sadiqullah now. Mahmood Al Hassan in blue here representing Team PF, whereas Sadiqullah fights in red representing Team Balochistan. Oh, a hard punch right into the mouth of Sadiqullah from Mahmood Al Hassan. Brilliant from him. तो इस तरह ये एक अच्छा पंच था, लेकिन कुछ ज़्यादा इसका तासुर नहीं पड़ा। हमने देखा सदीकुल्लाह पर। महमूद अल हसन ज़ाहिर है कि इस वक्त एग्रेशन दिखाते हुए कॉर्नर किया हुआ है सदीकुल्लाह को महमूद अल हसन ने। A very hard punch by Mahmood Al Hassan to the body. He's also taken a few hard punches, but Mahmood Al Hassan seems to be dictating the terms of this match somehow, because Sadiqullah is on the back foot. Sadiqullah tries to step in, tries to land a few punches, but gets it in the head in the process. Mahmood Al Hassan really in control of this match, and the pace is just as we would expect between two super heavyweights. We're seeing a spectacle of a match right now. This is exciting stuff, ladies and gentlemen, right here on Geo Super, where you're watching TSA Lahore's 38th Men and 2nd Women National Boxing Championship. Underway is Mahmood Al Hassan
currently trying to start a campaign for victory, but the impact of his punches is not being felt by his opponent Siddiqullah, who is taking them like a champion. Siddiqullah, although needs to start an attack of his own, or maybe he plans to stretch this fight out over maybe 2, maybe 3 rounds and see what the outcome is then, because both of these boxers seem to be conserving their strength. दोनों boxers ऐसे लग रहा है कि अगले राउंड के लिए अपनी जान बचा रहे हैं, शायद ये ज़्यादा खेलना चाहते हैं. Excellent footwork, what a treat to watch Mahmoud Al Hassan, or they move, and once again he is cornered. Siddiqullah is cornered, and that is the end of the first round. Very exciting, very fun to watch between these two. Both fighters being coached right now on what to do, what strategy to take. Mahmoud Al Hassan's camp seems to be fairly confident with the strategy they've taken so far, and they've retreated. Here comes some much needed water. Whereas in the red corner, we can see Siddiqullah in deep conversation with his coaches, trying to figure out what to do right in order to win this match. राउंड 2 का आगाज होता है इस बेल के साथ, और दोनों फाइटर्स रिंग के सेंटर में आते हैं, एंड they're throwing some punches to gauge the distance, और इसी तरह उन्होंने एक लाइट टैप भी किया, और अब शायद हम देखेंगे कुछ स्ट्रॉन्गर टैप्स भी. There is quite some distance between these two boxers currently. ऐसे लग नहीं रहा था apparently, लेकिन अगर आप करीब से देखें तो महमूद अल हसन के पास एक रीच एडवांटेज है. We're seeing an amazing contest here between both of these boxers. Siddiqullah now charging and making some good headway in the second round of this competition, and the referee is asking both boxers to take this contest seriously and to box their heart out, give a tougher fight to each other. And that is a tough fight. That is a hard punch thrown in by Mahmoud Al Hassan, and a good uppercut as well, catching Siddiqullah, but that wasn't as hard as you'd expect. Wow, the strength of these two boxers. I mean, if one of these punches was to be landed in the right way, we would see a straightaway knockout. But that is the caveat here. You can't expend that sort of energy without having a game plan first. And both of the boxers will figure out कर रहे हैं कि क्या सही game plan होना चाहिए, क्या technique, क्या strategy होनी चाहिए अभी तक in the second round of the super heavyweight match between Siddiqullah, who is in red, and Mahmoud Al Hassan, who is in blue. This is quite the event we're seeing here. These super heavyweights, they're taking their time, but they're landing very hard punches. Siddiqullah trying to keep his distance. Mahmoud Al Hassan on the other hand trying to close in. And like we saw in the first round, Siddiqullah is being cornered over and over again. Mahmoud Al Hassan taking full advantage of that. And Mahmoud Al Hassan now backing off to a corner because there seems to be a bleed for Siddiqullah. Siddiqullah seems to be bleeding from his face. And that is the end of round 2, coincidentally. While the medics tend to Siddiqullah, Mahmoud Al Hassan को एक rest मिलेगा, well-deserved rest. और हम round 3 देखेंगे in super heavyweights का, जिसमें हमें शायद
बेहतरीन एक्शन देखने को मिले in this last round of the last fight at the 38th Men and Second Women National Boxing Championship, brought to you by Geo Super and organized by DHA Lahore. Round 3. And round 3 is now underway between Sadiqullah in red and Mahmoodul Hassan in blue. Sadiqullah representing Team Balochistan, whereas Mahmoodul Hassan in blue representing Team PAF. And this is the final round of this fight. Let's see, at the end of the second round, we saw Sadiqullah bleeding from his right cheek. Will Mahmoodul Hassan be able to do more damage? Will the winner be announced by a knockout, or will this be a technical judgment? I have with me co-commentator Raja Asad Ali Khan. महमूदुल हसन लुकिंग लगता है फॉर्मेडेबल हैं बड़े, और एक बार फिर आप देखिए कि सदीकुल्लाह जो हैं उनको अब फिजियो की सहूलत दी जा रही है, और दूसरी तरफ महमूदुल हसन जो हैं वो एनर्जेटिक हैं, स्टेबल हैं, और वो सेंस कर रहे हैं कि उनकी पोजीशन सदीकुल्लाह से बहुत बेहतर है. The medic now checking how bad the bleed is for Sadiqullah, whereas Mahmoodul Hassan is ready to face him again in the corner. And now the referee has given them the green light to box. Mahmoodul Hassan, pardon me, might land a few more hard punches, and that could spell the end for Sadiqullah. Of course, technically, both of these boxes have been great, but the way Mahmoodul Hassan has commanded the ring and forced Sadiqullah into corners over and over again might work against him and might spell the end. And that was an extreme strength display from Mahmoodul Hassan. Very hard shots to the side of the body and very quick as well. That was the prowess of Mahmoodul Hassan as a boxer in the super heavyweight division. बड़ा अच्छा गेम प्लान था महमूदुल हसन का. आपने देखा कि वो एक फातिहाना अंदाज से अपने एंड पर गए हैं, और ये ज़ाहिर है कि एक पॉजिटिव साइन है कि तीनों राउंड तक सस्टेन किया सदीकुल्लाह ने. वो मौजूद रहे, गो कि उनको गाहे ब्लीडिंग भी हुई, लेकिन ही कंटिन्यूड द फाइट, और अभी भी एब्सोल्युटली. और इस ब्लीडिंग की वजह से सदीकुल्लाह को यह मैच forfeit करना पड़ा है. He has walked off and the gloves are off, ladies and gentlemen. That means we will be having the decision for the final event for tonight, which will most probably be in the favor of Mahmoodul Hassan representing Team Pakistan Air Force. Look at how he's talking. He's looking that he's in a party. You know, the way he's talking, he's mingling with the coach, and the way he's talking. That is the confidence. That is the background. That is the experience, and of course the technique which he has. The Mahmoodul Hassan of PAF. He's possibly a potential winner. Absolutely, this confidence can only exuberate one thing, that he is very confident about the fight that he's just played, and he might be the winner. Winner! Here is your winner for the super heavyweight fight 92 kg bout, Mahmoodul Hassan representing Team PAF, where you're watching DHA Lahore's 38th Men's and 2nd Women's National Boxing Championship. I'm your host and commentator, Mohammad Moinuddin, and with me is commentator Raja Asad Ali Khan.